Hello once again to this crypto mastery course. We are at module 7 now. After completing this module, you'll be 70% done with this crypto mastery course. So, congratulations to you that you've made it this far. You're almost done. आज का जो मॉड्यूल होगा वो अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में इतना लंबा हम इस मॉड्यूल को नहीं करेंगे. वी विल ट्राई टू मेक इट एज you know, concise and to the point as possible. So the three things that we are going to talk about today is सबसे पहले हम बात करेंगे different chart patterns की कि chart patterns किस किस्म के होते हैं, उनको कैसे recognize करते हैं. कुछ bullish chart patterns होते हैं, कुछ bearish chart patterns होते हैं. उसके बाद जब हम chart patterns की बात कर लेंगे then we will talk about volume. Volume किस तरीके से हम देख सकते हैं और वॉल्यूम को देखते हुए हाउ कैन वी स्पॉट फेक आउट्स. आई एम श्योर आपने ये टर्म सुनी होगी कि इस पॉइंट पे सर्टन कॉइन का फेक आउट हो गया है. फेक आउट के लिए एक और जो चीज़ यूज़ की जाती है, एक और जो टर्म यूज़ की जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेविएशन. तो डेविएशन के बारे में थोड़ी सी बात हम कर लेंगे एंड देन ऑब्वियसली वी विल मूव ऑन टू द लास्ट टॉपिक विच इज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग DCA. DCA एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है विच ऑल द big traders use to not only secure profits but um, to not buy in just one go, and there's a reason behind why they don't buy in one go. As always, before I begin, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने पानी पीना है, कोई ब्रेक लेनी है, वो अभी ले लीजिए स्टॉप करके मॉड्यूल को. और जब मॉड्यूल स्टार्ट हो तो प्लीज़ वॉच इट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द वेरी एंड. Okay, so now the chart patterns that we're going to talk about, there are a bunch of chart patterns, लेकिन हम बात करेंगे जो क्रिप्टो के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं. और मोस्ट ऑफ द टाइम जब वो चार्ट पैटर्न्स बनते हैं तो they tend to be respected on whatever time frame that you're looking at. LTF या HTF, obviously अगर HTF पे एक चार्ट पैटर्न बन रहे हैं that breaks out तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे फॉर अ बिगर पम्प. स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे we will see smaller pumps, but that's besides the point. Understanding and seeing these chart patterns is very very important. So सबसे पहले हम तीन ऐसे पैटर्न्स के बारे में बात करते हैं जो कि बहुत कॉमन बुलिश रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं. और इनको स्पॉट करना आपके लिए जब आसान होगा वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग. तो द फर्स्ट वन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कॉल्ड अ डबल बॉटम चार्ट पैटर्न. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं. इट्स कॉल्ड डबल बॉटम और डब्ल्यू पैटर्न. सो if the coin is doing something like this, it will do this, okay, and do something like this. इसको हम बोलते हैं डबल बॉटम या फिर डब्ल्यू पैटर्न. और इसकी एक नेक लाइन होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं बिफोर वी move along further. But let me just quickly change the color of the line because I want my lines to be a certain color. So the line that I've drawn is called the neckline of the double bottom. Okay, double bottom में usually होता है कि price किसी भी coin की बेशक LTF हो HTF हो, वो एक point को दो दफ़ा visit करती है ऐसे, and उस point से वो reverse करती है. Equal lows बनते हैं उसके अंदर. For example, अगर this is $1, if the price of the coin is $1 over here, right here, तो ये जब पंप करके वापस नीचे आएगा तो वी एक्सपेक्ट कि इस पॉइंट पे भी ये $1 या थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, 80 सेंट्स, 90 सेंट्स, बट क्लोज टू $1, और वो उधर से रिवर्स करता है. नाउ once you start seeing a pattern develop, your eyes will very quickly catch on to these patterns as you practice more often. तो नेक लाइन जब ये टूटती है इसकी डबल बॉटम की, तो ऑब्वियसली टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड जो आपकी रेजिस्टेंस पॉइंट होते हैं जिस भी टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, इस एरिया में नॉट द राइट, सो टूवर्ड्स
the left hand side right here, जो आपका highest resistance point होगा, if the neckline breaks and we hold the neckline as support, then आपका फिर अगला target next resistance point पे होगा. So this is the first pattern that is very popular and is used by traders most often. अगर मैं W pattern या double bottom pattern आप लोगों को दिखाऊं इसका example, so we can probably take a look at the Bitcoin chart and try and find a double bottom pattern. So once your eyes get used to it, you will start seeing these double bottom patterns very frequently. So I mean, this is not a perfect one, but here's a double bottom pattern that is, sorry, here's a double bottom pattern that was made, right? And then essay. So you see how the price is visited twice, but over here you can see the neckline is over here, roundabout over here. तो इसको अगर हम थोड़ा बड़ा करें लाइन को, and then make it white, 3 points. So you see how once the neckline was broken, over here, इस जगह पे आपकी neckline टूटी है, right? And you came back down to retest it, but you didn't hold the support right here. So you went all the way back down. इस point पे एक और भी double bottom form हुआ है, where it did something like this, right? Made a wick right here. Again, this was your neckline. Your neckline was tested again, came back down to retest, and you didn't hold, so you went back down again. But usually, when you see a double bottom forming on a higher time frame, and that higher time frame is respected, so that double bottom, you know, is a bullish reversal pattern. अगर हम इसको daily time frame पे देखेंगे, तो I can probably show you guys an example of a double bottom. So here, this is a good example of the double bottom, right? So we see a double bottom forming over here, right? Double bottom बना, और ये आपकी neckline है, neckline. And then once this neckline was, it was retested, went back down, and then it broke through, and you know, you got a bullish reversal pattern that way. So double bottom एक ऐसी चीज़ है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं to see bullish patterns. ये बहुत अच्छा और effective pattern है which you can use on LTF and HTF to make profits. I keep messing up the line and I keep changing the color of it again and again. I'm just going to do this one final time so I don't have to do this again. Okay, so that was the first pattern that we look at, which is a bullish reversal pattern. Now the second pattern, which is also very common, is called a falling wedge. Falling wedge basically एक lower trend line होती है, एक upper trend line होती है, ऐसा बनता है, और जो आपका प्राइस एक्शन होता है वो ऐसे होता है. It ping pongs between these two trend lines. ठीक है, ये इन दो ट्रेंड लाइन्स के दरमियान वो पिंग पोंग करता रहता है, and at a certain point it reaches an apex, and ज़्यादा chances इसके ये होते हैं that it breaks to the upside. A falling wedge, whenever you see a falling wedge, it's a bullish pattern, and this tends to break towards the left. अब फॉर एग्जांपल अगर इस पॉइंट पे आके ब्रेक हुए तो आपके जो टीपी होंगे वो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे जो आपके हायर रेजिस्टेंस पॉइंट है. सो इफ this is a resistance point, this is a resistance point, these will be the TP that you use. I personally have traded a lot of falling wedges and made a lot of money, and these patterns are very successful, and they can also make you a lot of money. And इसके अंदर आपको टच पॉइंट्स ढूंढने पड़ते हैं, टच पॉइंट्स टू द अपसाइड, टच पॉइंट्स टू द डाउन साइड. तो अगर हम इसको देखें, दिस आई थिंक could be
a potential falling wedge right here. Okay, so this trend line, and if we go here, this trend line, right? So this is a falling wedge, um, and you see how the price is ping-ponging between these 2 points, up, down, up again, down, and it finally breaks through. And when it broke through, तो आप अगर zoom out करेंगे daily time frame पे, so you will look towards the left hand side and we'll see where the resistance is. तो अगर हम इधर से resistance देखेंगे तो probably इन points के ऊपर resistance होगी towards the left hand side. So what I'll do is I'll zoom out further, and you see how there's resistance points right here. If I make a horizontal line right here, आप ये देखें कि exactly उस point पे जाके जो हमारी prior resistance है, इस वजह से मैं आपको कहता हूँ आप left hand side पे देखेंगे excuse me, आपने left hand side पे देखा कि ये आपके resistance point है, confluence है आपकी, and that's where exactly it got rejected from, right? So if you bought it over here or even over here in the falling wedge and you identified that it was a falling wedge, once it broke out you could easily spot that this is your next resistance and this is where you know, the coin might get rejected, and that's what happened in this scenario. Again, जिस तरह आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा और उतनी आपकी skills enhance होती जाएंगी. Like I said before, you can trade these on LTF and HTF, whatever pattern that you're trading at. Okay, so that was one example of a falling wedge. अगर हम और थोड़ा zoom out करें तो I'm pretty sure we can see many more examples of a falling wedge. But I gave you, I think, a really nice example of a falling wedge. So दो जो हमने पैटर्न्स इनके बारे में बात कर लिए हैं वो हैं आपके डबल बॉटम एंड फॉलिंग वेज. तीसरा जो हम पैटर्न बात करेंगे वो ये होगा कि आप किसी भी वक्त किसी कॉइन को अगर देख रहे हैं और वो एक बहुत ज़्यादा जल्दी से डंप करता है, एंड डंप करने के बाद जब उसका आहिस्ता आहिस्ता साइड वे जाना शुरू हो जाता है, राइट, दैट मीन्स दैट द सेलिंग प्रेशर, अगर फॉर एग्जांपल इस किस्म की बड़ी सी रेड कैंडल आती है, राइट, इस तरह सेलिंग कैंडल आती है, एंड देन द सेलिंग प्रेशर स्टार्ट्स टू सबसाइड. यू सी हाउ ये एक रेड कैंडल आई एंड देन फॉलो थ्रू वॉल्यूम नहीं था और आहिस्ता 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 करते वॉल्यूम सबसाइड हो गया और इस पॉइंट पे आपको ग्रीन वॉल्यूम ज़्यादा आ गए तो इधर प्रॉब्ली बिटकॉइन जो है वो पंप किया होगा. सो the point that I'm trying to make is once you see a big red candle towards the downside and then अगर आप वॉल्यूम में देखेंगे और वो sideways कॉइन जाना शुरू होता है, it will start to make a rounded sort of a bottom, ऐसे round bottom बनाएगा वो. और rounded bottom का मतलब है कि there's a chance that this coin is now bottoming by looking at volume, RSI and all these things, and this coin will go up. Even though अभी मैंने चार्ट नहीं खोला हुआ बिटकॉइन का, हम अगर चार्ट खोलेंगे तो हो सकता है कि इस पॉइंट पे ऐसा ही कुछ हुआ हो, where price pumped over here, it dumped in this area and then went sideways for a bit. So if I open the chart, you see exactly वही चीज़ हुई है, even though मुझे पता भी नहीं था कि ये इस पॉइंट पे ये किया होगा. So now if you see, आपको बड़ी रेड कैंडल मिली, ठीक है, रेड कैंडल मिली और इधर नीचे भी वॉल्यूम के अंदर कैंडल मिली. देन व्हाट इट डज नेक्स्ट इज इट स्टार्ट्स टू गो साइडवेज 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 साइडवेज. वॉल्यूम भी नहीं आ रहा, ना सेल करना, बाय का आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, एंड देन यू स्टार्ट सीइंग दैट वॉल्यूम इज कमिंग ओवर हियर. QQE मोड में भी आपको वॉल्यूम नजर आ रहे और ऑब्वियसली RSI भी इस वक्त बिल्कुल बॉटम पे थी. तो दैट शुड हैव बीन योर सिग्नल कि यार ये एक अच्छा पॉइंट है और राउंडेड बॉटम भी बन रहा है. So you see how rounded bottom बन के starts pumping towards the upside. Okay, so this is the third pattern that we are going to look at and see and make profits that way, is the rounded bottom. Now ये तो हो गए bullish patterns. अब हम बात करेंगे 3 bearish patterns की जो कि ज़्यादातर future traders use करते हैं, but you can use these also
to book profits and get out of trades accordingly. So the first bearish pattern, ये basically जो bullish patterns मैंने अभी आपको बताया ना, इन तीनों के bullish patterns के opposite होंगे. पहला जो मैंने आपको bullish pattern बताया था वो था W pattern, right? तो पहला जो bearish pattern होगा, it is called, ये this is called a double bottom, this one's called a double top. ऐसे करके double top बनेगा और डबल टॉप के दरमियान में उसकी एक नेक लाइन होगी. वंस दैट नेक लाइन ब्रेक्स इट विल प्रॉब्ली गेट रीटेस्टेड एंड नीचे इस तरह आता जाएगा. सो डबल टॉप में ये होता है कि द प्राइस ऑफ अ एसेट और कॉइन विजिट्स हाइज ट्वाइस, ओके, एंड ये वाला जो नेक्स्ट हाई होता है इट्स नॉट एबल टू यू नो go higher than this one or make higher highs, and then या equal होता है या थोड़ा सा deviate करते हैं, and then neckline eventually टूटती है and it starts to come down. So हम bearish pattern अभी कुछ देखते हैं. We can spot any bearish pattern um, that would be great for us. So we're looking for a double top. So this could be if I open the, actually this is an example of a double top. So top over here and then top over here, right? So this is a double top. Price wasn't able to break the price, and this is your neckline. But I'm trying to see another example where I can show you a double top. Sorry, हम देखते हैं डबल टॉप. अगर हम बड़े स्केल पे इसको देखें तो ये है डबल टॉप जो बना है, right? So this is your double top because we're looking at the daily time frame, so it's a bigger top that's being made, and this is your neckline right over here. So once this neckline was broken, you see how we never came back above it, and now अभी हम उस डबल टॉप के double top को retest कर रहे हैं right here over here now. So we spent quite a lot of time below the neckline of this double top that was made. ये क्योंकि हम HTF पे देखें तो we're seeing a bigger example of it. Maybe we can try and find a better example or a smaller example on lower time frame. So if I go on the 4-hourly time frame and reset the chart, you can try and identify a double top over here somewhere. Again, practice makes perfect. The more you practice, the more you will realize. I think this is a good example of a double top right here. Right over here. M pattern भी इसको बोलते हैं कुछ लोग, double top या M pattern. तो आप ये देख सकते हैं, ये आपका पैटर्न था, ये आपका पहला हाई है, and you came back down, then went oops. So ये आपका पहला हाई है, came back down, went back up, and then down, right, all the way down. और ये आपकी, ये वाली आपकी नेक लाइन है. अब देखें, इसने जो फेक आउट, मैं आपको चीज़ बोलता हूँ, इसने फेक आउट किया थोड़ा सा लोगों को दिखाने के लिए. फॉर एग्जांपल, ये आपका पहला टॉप बना, दूसरा टॉप बना, ये आपकी नेक लाइन है. इस पॉइंट पे हमने नेक लाइन को तोड़ दिया, इधर नेक लाइन को तोड़ दिया. जब बेरिश रीटेस्ट होने गया तो इट वेंट अबव द नेक लाइन, और इससे लोगों को लगा कि अब नेक लाइन से ऊपर आ गए तो दिस वुड मे बी स्टार्ट पंपिंग. बट लाइक आई सेड, वी ऑलवेज हैव टू सी द रीटेस्ट. व्हेन इट केम बैक डाउन टू डू द रीटेस्ट, इट फेल टू डू द रीटेस्ट, और फिर इसने बेरिश रीटेस्ट किया, और बेरिश रीटेस्ट पे हमें कंफर्म हो गया, एंड देन इट वेंट ऑल द वे डाउन, लोअर हाइज लोअर लोज. सो इस किस्म की फेक आउट्स और ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड इट्स important for you to realize these things. And I think this is a really good example that we found just now of how, fake outs and deviations happen. So this is double top for you. Okay, the next bearish pattern that we're going to look at is called पहला जो हमने पढ़ा था वो था falling wedge. जो bearish pattern हम पढ़ेंगे, it's the opposite of it, it's called a rising wedge. सो राइजिंग वेज के अंदर ऐसे होता है, द प्राइस ऑफ एन एसेट
पिंग पोंग्स बिटवीन टू ट्रेंड लाइंस, अपर ट्रेंड लाइन, लोअर ट्रेंड लाइन, और ये ऐसे राइज करती जाती है, प्राइस करती जाती है, और राइजिंग वेज के अंदर इवेंचुअली चांसेस ये होते हैं कि बेरिश पैटर्न है, it breaks to the downside. So once it breaks to the downside, it's most likely going to test it as a bearish retest and then start coming back down again. Okay, so rising wedge का example अभी हम देखते हैं. Falling wedge was the opposite of it, obviously. वो ऐसे होते हैं नीचे की तरफ, और उसके अंदर पिंग पोंग करती है price, then breaks towards the upside. Okay, so now let's take an example of what a rising wedge might look like. So I'm going to open the chart again on the BTC time frame. इसमें again rising wedge अगर आपको नज़र आ रहा हो, और वो जब आप देखें कि RSI बिल्कुल पीक पे चलेगी एंड वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, that means that the rising wedge will probably break down, and price will start to go down. So let's see if we can find a rising wedge. हम देखते हैं कि अगर हमें HTF पे कोई राइजिंग वेज मिल जाए तो वो अच्छा एग्जांपल होगा. Yes, I think this is a good example. So you see how this is a trend line, right here, and then this is a trend line right around here. I mean, perfect nahi, lekin you guys get the point. I can make it perfect for you guys, but if we do like this, and if we extend it around here somewhere, so I mean you guys get the point. हमने support touch points ढूंढने हैं to the downside, towards the upside, and then ऊपर भी इसी तरह ही करना है हमने. have to find multiple touch points. Now you also have to realize the price ping pongs, right? So ऊपर नीचे, और ये देखें आप डबल टॉप टाइप का ही बन रहा है, double tops, and then finally it breaks down, right? It breaks down, goes all the way down, इधर से rounded bottom बनाने की कोशिश की, comes back up, and obviously this is your resistance, क्योंकि आपको मैंने बताया है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस पॉइंट बनाने पड़ते हैं हमें. तो ये आप देख सकते हैं इसकी रेजिस्टेंस पॉइंट था डबल टॉप का, राइट? सो नेक लाइन को इसने टेस्ट किया एंड केम बैक ऑल द वे डाउन. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ a rising wedge. Okay, so now the last example that I'm going to give you is called a rounded top. पहले हमने ये बताया था कि राउंडेड बॉटम बनता है, और जब पंप आ रहा हो किसी कॉइन के अंदर तो वी वांट टू फाइंड अ राउंडेड टॉप. सो जब पंप आए एंड वंस वी सी दैट द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग एंड price has started to go sideways, that means there's a good chance that the coin will start dumping. So I think this could be a good example of it. So now ये आप देख सकते हैं कि ये रेगुलरली हमें वॉल्यूम आ रहा है, ग्रीन कैंडल्स, यू सी दीज ग्रीन कैंडल्स go all the way, and you see how the price is sort of making a round on the top, and then RSI भी बिल्कुल टॉप पे है, और आपका नीचे से भी वॉल्यूम क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया. so it's going down and the price is failing to go up. So what it does is it starts to go down, market structure change, and then boom, all the way down इस जगह पे. So this is your third pattern that you can look at. एंड जो वॉल्यूम की भी मैंने आपको बात बोली थी शुरू में, कि आपको वॉल्यूम को देखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है व्हेन यू आर ट्रेडिंग और गेटिंग इनटू एनीथिंग. वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल पंप आता है, इफ़ यू सी अ पंप हैपन towards the upside, then you want to see green candles over here or green volume bars continuously supporting. मतलब जितनी पहले green bar की height है उतनी भी बाकियों की होगी, तो उसका मतलब है वो पंप सस्टेन रहेगा. लेकिन फेक आउट को स्पॉट करने का बेहतरीन तरीका होता है, बेशक पंप हो या डंप हो, अगर एक बड़ी सी कैंडल बनती है और उसके बाद फॉलो थ्रू वॉल्यूम नहीं आता, इसका मतलब है कि वो कॉइन वो अभी उस वक्त फेक आउट हो रहे, राइट?
सो फॉर एग्जांपल अगर इधर हम देखें, इस पॉइंट पे अगर देखें, तो यू सी हाउ यू सी अ बंच ऑफ ग्रीन कैंडल्स, पहले एक कैंडल बनी है एंड देन बाकी जो कैंडल्स हैं उससे भी बड़ी हैं, सो वी सी ए सस्टेन पंप टुवर्ड्स द अपसाइड। जो ही वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हुआ है, वॉल्यूम कम हुआ है, और इधर भी वॉल्यूम का बार कम हुआ है, आर एस आई स्टार्ट कमिंग डाउन एज वेल, दैट मीन्स दैट इट्स गोना स्टार्ट टू गो डाउन। ओके, सो वॉल्यूम की एक ये बहुत बड़ी इंडिकेशन होती है वेदर इट्स टुवर्ड्स द अपसाइड और टुवर्ड्स डाउन साइड। यू वांट टू सी सस्टेन्ड वॉल्यूम कम इन। इसका हम एक एग्जांपल अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं, इफ़ आई कैन स्पॉट an example of it for you guys. Uh, let's see if we can find out LTF 4 hours. Um, so here, this would be an example of a fake out right here. You see, एक ग्रीन बार बने, दूसरा ग्रीन बार बने, एंड देन उसके बाद उससे बड़ा रेड बार बने, and we've started to dump, and the volume was more. So this was sort of like a fake out. इस जगह पे अभी आप देखें, currently BTC is trying to make a rounded bottom, right? RSI भी बिल्कुल नीचे आई हुई है, और अगर आप divergences की हमने उस दिन भी बात की थी, there seems to be a divergence, bullish divergence developing on the 4 hour chart. ये देखें, the RSI is going up this way and the price has been coming down. So if it's doing that, that means there's a good chance that the price will pump. And if we look at the volume, you can see इसके अंदर वॉल्यूम की जो बाज हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते ये ग्रे होंगे, then eventually green, and we will start pumping towards the upside. Okay, so volume is a really good indicator that you guys can use to identify trends and fake outs and deviations. और जो आखिरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी वो थी about dollar cost averaging. What is DCA and how you guys can use DCA? Basically DCA का मतलब है dollar cost averaging. तो बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग अपना कॉइन, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई सिग्नल मिलता है कि इस पॉइंट से कॉइन बाय कर लें, और वो कॉन्फ्लुएंसेस को और बाकी सारी चीज़ों को नहीं देखते, और आपके पास अगर $100 हैं, आप सारे $100 इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं, यू सीन वीडियोस वेयर इट टेल्स यू टू बाय इन पार्ट्स, यू वुड से कि ओके इतनी कॉन्फ्लुएंस है लेकिन आई सी सपोर्ट बिलो ऑल्सो, तो यू विल ऑलवेज बाय इन पार्ट्स। सो अगर आपके पास $100 है, 20 का आप इधर लेंगे, 20 का आप इधर लेंगे, और आखिरी जो आपका बाय होगा वो सबसे बड़ा होगा, और आपकी एवरेज कॉस्ट जो बनेगी would be somewhere in the middle, right? So if you buy over here, this is your cost, this is your average cost. But if you buy over here, over here, and over here, तो आपकी जो average cost है वो it will be somewhere around the middle. So that's what dollar cost averaging is. Again, if there are any confusions, if there is any question that you guys might have, please go and revisit these lectures. And again, once again, like I've said many times before, you can always join our free Discord group, which currently has about 50,000 members in it. The link to the Discord will be in my Instagram's bio. You can go there and join our community. And I will see you guys in the next module with another topic. See you guys in module 8. Take really good care of yourself and your family. Bye bye.